Lal Chowk in Srinagar, the capital city of Jammu and Kashmir, was once a hotbed and an epicenter of protests. And what we are talking about is anti-India protests led by separatists seeking the secession of Jammu and Kashmir from the Indian Union. It was not uncommon then to see Pakistan flags being waved on the streets of Srinagar. Today the scenario has changed completely. The Tiranga flies atop Lal Chowk. Kashmir is more integrated than ever with India following the virtual abrogation of Article 370 and the appeasement of those seeking secession significantly on the wane. It is in this context that the events of June 24 this year assume serious importance. At Pratap Park, barely 400 meters and just 2 minutes away from Lal Chowk, the Union Home Minister Amit Shah laid the foundation stone of the Balidan Stambh, a memorial for those who have laid down their lives for protecting the sovereignty and integrity of India against the scourge of the proxy war waged by Pakistan in Jammu and Kashmir. According to the South Asia Terrorism Portal, 6,636 security personnel have been killed in Jammu and Kashmir since 1988. The worst year in terms of casualties was 638 in 2000. Since 2019, these numbers have been declining, but the spectre of terror remains nevertheless. These security personnel belong to the armed forces, the paramilitaries, and also personnel belonging to the Jammu and Kashmir police. The laying of the foundation stone in Pratap Park, just 2 minutes away from Lal Chowk, is also hugely symbolic. It's a direct repudiation of terror of those who sympathize with it and an honor to those who have fought it. On this special episode of Inside, our reporters Yawar Bhat, Suhail Bhat and Pradeep Dutta explain to us through perspectives and interviews of why this is a defining moment in Jammu and Kashmir. It's the first time in the history of Jammu and Kashmir when the Balidan Stambh, the martyrs memorial, has come up at the heart of the Srinagar city, that's the Lal Chowk. Considerably, the project was designed and proposed by the Srinagar Smart City, and the foundation stone was laid by the Home Minister during his 2-day visit to the Union Territory of Jammu and Kashmir. Considerably, this is the dedication to those who laid down their lives. Now, government has taken many more steps to initiate the process of this Balidan Stambh, and the government has set up a deadline to frame this project as soon as possible so that the people can see that it's for the first time that Kashmir is witnessing a change and the Kashmir is witnessing their real self-development. Yawar spoke to people in Srinagar to get an idea about how times have changed. They are too late. It should have been too earlier. But we have seen how actual martyrs and actual people who have stood for the humanity and for the real Kashmiriyat have been totally ignored. I was showered with the blood at the Dasgir Sahib. Why this man is talking about the Hanafi Islam, the Sufi Islam, by those who were the radicals and those people who engineered it. Today I see them to become punches and sarpanches. ये अच्छी एक शुरुआत है जो यहाँ पर स्टोन फाउंडेशन रखी गई परसों हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह साहब ने ये एक हमें एक बदलाव सा नज़र आता है। आपने देखा कि पिछले 70 सालों में या तो पॉलिटिकल टेररिज्म यहाँ रहा है या बाकी जो अक्रॉस द बॉर्डर जो टेररिज्म यहाँ फैला था। हमें सबको ये मालूम है कि ये वही लाल चौक है जहाँ पर आपके सब्ज़ परचम लहराए जाते थे और स्टोन पेल्टिंग के वगैरह या हड़ताल के वगैरह कुछ दिख नहीं पाता था और हज़ारों की तादाद में जो है फैमिली वो इफ़ेक्ट हुए हैं। और आज इस स्टोन फाउंडेशन का रखना ये बड़ा एक ऐतिहासिक कदम है।
May last year, Amreen Bhatt, a television star, was murdered in her house in Badgaon after terrorists barged in and shot at her and her nephew. More than a year later, her family is still coming to terms with her loss. Her father holds a phone, playing a clip of one of her television performances. 2 days after she was killed, her murderers were slain in a counter-terror operation. हमने 1 साल बड़ी मुश्किल से गुजारा। मैं क्या पता वो क्या था मेरे लिए, हमारे घर के लिए। तब से मेरा बाप बिस्तर में पड़ा, वो हमारा सहारा है, मेरे बच्चों का सहारा है, इस घर का सहारा है। ये श्रीनगर के लाल चौक में प्रताप पार्क में ये बलिदान स्तंभ बनाया जाएगा, जिसमें तमाम कश्मीरी, ख़ासतौर पर अमरीन जैसी लड़कियां जो है जिनको टारगेट, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को इस तरह से टारगेट किया गया। वो तो अच्छी बात है ना, वो तो बात अच्छी है। जब हम जाएंगे, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, इसके बच्चे वो देखेंगे ना क्या हमारे घर के साथ क्या हुआ। हाँ सर, 1 साल तो बीत गया था, मगर सुकून कुछ भी नहीं है इस घर में। मैं भी एक मजदूर हूँ, मैं यहाँ पर आड़े में काम करता हूँ। क्या चलेगा, मेरा जो बाबा है वो बिस्तर पर लिपटा हुआ है, वो हर हमेशा एक कमरे में जाता और रोता है। फिर गवर्नमेंट आए थे यहाँ पर, उन्होंने कहा कि नौकरी की वादा किया है हमसे, कुछ रिलीफ दे दिया उन्होंने, मगर उसका कोई अभी तक जवाब नहीं हुआ। उस वक्त जो फायरिंग हुई थी, आपका बेटा भी उसमें शायद इंजर्ड होता, अब उसकी तबीयत कैसी है? अब तो उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, मगर जब वो स्कूल जाता है वो लिख रहा, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होता है उसको बहुत दर्द होता है, लिखने में कमज़ोरी बहुत है उसको। ट्रीटमेंट में जब बरजुला में भी मैंने ये केस भी बनाया है, DSP ने भी बनाया उसका केस, ज़ाहिर शरीफ वालों ने। तो वो उस इंसिडेंट को याद करता रहता है, उसके बारे में बात करता है। वो उसने ईद के दिन बोला मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, खान माजर वान माजर मेरा सब कुछ आईनी करता है। मैंने आपको बोला मुझे कुछ लाओ, आपने बोला मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मैं आनी को बोलूँगी, अगर आनी जिंदा होती है, मैं आनी को बोलूँगी ये लाओ, मैं बोलती हूँ, वो मुझे लाते देते। वो बहुत ही सदमे में है, उसके सामने मैं अपनी बहन की बातें नहीं करती है। ये बताइए कि 1 साल हुआ है तब से जब अमरीन को यहाँ पे टारगेट किया गया, उसे यहाँ पे मार दिया गया, तो अब क्या आपको लग रहा है ये साल कैसे बीता आपका? क्या अमरीन क्या अमरीन पोजू पत्थर मैं सोई पकनावान निवान और योर तत पे पत्थर पकनावान सोई में शान जुम निवान शान सम ये खर्च मे सोरे पकनावान सोई डॉक्टर सुंदर सोरे पकनावान सोई में अक्टूबर से गड़ान जुम दपान सर्दी वन नीर जुम तब पकन सोई पत् यह वरी गो इथे पे परेशान हम बहुत क्या कर बेकार कि लड़को यह बेकार यह क्या कर पन्नस आयालस कि मे कर सरकार कर सरकार ने 10 लाख रुपये दित मे 10 लाख रुपये दित मे गवर्नर दित 5 लाख डी सब दित 5 लाख मे तमिस बचस आमुत अकिस फायर नर। Thousands of civilians have been killed by a terrorist's bullet in Jammu and Kashmir, many of them for their loyalty and allegiance to India. This even dates back to before the onset of terror. In 1947-48, when tribal invaders from Pakistan began their pillage of Kashmir, they were waylaid by a youth called Maqbool Sherwani, who kept them at bay and prevented their attempted march towards Srinagar. For this act of defiance, Sherwani was captured by these invaders, tortured and killed. He died for the defense of India. And as a mark of tribute, a memorial has been erected in his honor at Baramulla.
Right from 1947, thousands of Kashmiris, young women and men have laid down their lives for the nation. The first martyr of Kashmir was Muhammad Maqbool Sherwani. In 1947, when tribal invasion took place, the tribal invaders reached Baramulla. Here in Baramulla, it was Muhammad Maqbool Sherwani who misled and smartly misguided those tribal invaders. The invaders actually wanted to march towards the Srinagar, but it was Muhammad Maqbool Sherwani's smartness and extraordinary intelligence that pushed those invaders towards Bandipora. This way, Srinagar city was secured. The key installations in Srinagar, like Srinagar airport, was secured. Following that, the Indian army landed in Kashmir Valley and effectively pushed those invaders to the area which now we know as Pakistan occupied Kashmir. Muhammad Maqbool Sherwani was later killed by those invaders in Baramulla. Here at Baramulla, this is the exact place where Muhammad Maqbool Sherwani was brought and fired upon. Here in Urdu, it's mentioned that in November 1947, the famous martyr of Kashmir, in fact, Muhammad Maqbool Sherwani, was killed here on the directions of Pakistani officials by the tribal invaders. 14 rounds of, in fact, 14 bullets were fired upon Muhammad Maqbool Sherwani, and here at this place he was killed. This community hall here at Baramulla is named after Muhammad Maqbool Sherwani. Muhammad Maqbool Sherwani was affiliated with Jammu and Kashmir National Conference. He stood for the unity, the communal harmony, and in fact helped Indian Army to prevent the situation, in fact, to prevent those tribal invaders from marching towards Srinagar. He is the first martyr of Kashmir. Since 1947 to till date, Kashmiris, young men and women, the old one, irrespective of their caste, creed and color, irrespective of their professional backgrounds, have laid down their lives. The terror groups have targeted Kashmiris irrespective of their backgrounds. By laying foundation stone of Martyr Memorial at Pratap Park in the heart of Srinagar city, that used to be hub of separatist and terror-related activities, Union Home Minister Amit Shah has sent unequivocal message that in Naya Kashmir, Deshdroh will find no sanctuary or space. Only unwavering loyalty and undying patriotism of Deshbhakt will be hailed and glorified. Not only that, this monument is further going to ignite spark within Kashmiris, inspiring them to pick up pen and gun for service of nation, not against motherland India. And indeed, it was a strong message by the Union Home Minister, one that had to be sent. Nothing can be more tragic and painful than this. During the last 75 years, not a single memorial was raised in Kashmir Valley to remember grit, determination and valor of our brave hearts who sacrificed their lives for safety, security and integrity of the country. They were the one who took bullets on their body, stood like a wall on border to ensure peace and prosperity in Kashmir Valley. Coming up of this memorial will be resolute response to politics of appeasement, because of which killers like Burhan Wani were treated like heroes and they were glorified, and killers like Yasin Malik, they were projected as peace builders. This memorial is going to inspire youngsters all over the country, especially in Kashmir Valley, to don uniform to serve motherland India. Many who have been part of the security establishment in the past admit that this is a pivotal moment in the history of Jammu and Kashmir. It is a matter of pride for every soldier, whether from army, whether from paramilitary forces, or J&K police, that such a memorial is coming up in Pratap Park near Lal Chowk, which was at one time the center of all agitations, center of all separatist activities, center of all terror activities. And to have a memorial there
glorifying the sacrifice of those who laid down their life for this country, for this nation, for peace in this country, for national integrity of this country, and for general law and order in Kashmir Valley, Jammu and Kashmir. I think it's a great moment, and that too when Shyama Prasad Mukherjee's anniversary is there. It's a moment for everyone to be proud of, every soldier, and to have a memorial right in Pratap Park will signify a new Jammu and Kashmir, new Kashmir Valley. Finally, the Government of India has taken the decision to install a Balidan Stambh in Kashmir Valley, and that too in Srinagar. And this will send a big message across to all the anti-national movement people over there who are bent upon disturbing peace and who are bent upon following the diktats of the ISI. This Balidan Stambh will serve as an indicator to all nationalist forces that yes, that there are people who have sacrificed their lives for the independence of this country and also for Kashmir Valley. This Balidan Stambh will also be a rallying point for all nationalist forces over there. It's a very good decision, and I compliment the Home Minister and the Prime Minister of India for taking this decision and following it up. In fact, Pradeep Dutta posed a pertinent question to the Union Defence Minister Rajnath Singh as well during his visit to the Union Territory. ऑल पार्टी मीट का दौर चल रहा है। पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस करके हमने देखा कि हमारे विपक्ष के नेता जुड़ चुके हैं बीजेपी के खिलाफ, और हमने देखा कि 75 वर्ष लग गए हमें यहाँ पे एक वॉर मार्टर मेमोरियल बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में। जबकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति लगातार देते आए हैं। कभी आपको दुख होता है कि 75 वर्ष क्यों लगे इस मार्टर मेमोरियल को बनाने के लिए, और बात करते हैं पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस की, तो आप इसको कैसे देखते हैं? यदि दुख न होता तो हम वार मेमोरियल क्यों बनाते? कसक थी, तकलीफ थी, इसीलिए बनाया है कि होना चाहिए। Pradeep Dutta also spoke to Nirmal Khanna, the wife of squadron leader Ravi Khanna, who was killed along with 3 other Air Force personnel in 1990 by terrorists of the Jammu and Kashmir Liberation Front. In March 2020, 30 years after this crime, the separatist Yasin Malik, now convicted of terror in another case, was charged for this crime. जब से ये पता चला है कि अमित शाह जी आए हैं, उन्होंने इनॉग्रेशन करी है बलिदान स्तंभ की, तो बड़ी खुशी हुई है। गवर्नमेंट की तरफ से ये जो स्टेप लिया गया है, इसको हम वेलकम करते हैं। मैं एक शहीद की बीवी होने के नाते इसको बड़े सम्मान से इसको देख रही हूँ, और मैं वेलकम करती हूँ गवर्नमेंट का ये स्टेप कि ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा, देर आए दुरुस्त आए। भले ही ये बड़ी देर के बाद हुआ है और सब कुछ होता रहा है श्रीनगर में, कश्मीर में, लेकिन बलिदान स्तंभ का बनना एक बहुत बड़ी बात हुई है। ये हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को, पीढ़ियों के लिए ये एक प्रेरणा है कि जिन शूरवीरों ने अपने देश के प्रेम के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, शहादतें दी हैं, तो उनके लिए एक प्रेरणा है। हम अपने बच्चों को इस बलिदान स्तंभ के द्वारा सेंसिटाइज कर सकते हैं कि देश प्रेम क्या चीज़ है। और तीसरी बात मैं ये कहूँगी कि जिन लोगों ने, चाहे वो किसी जाति धर्म के हैं, बेल्ट फोर्सेस में हैं, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं। क्यों की हैं? क्योंकि उन्होंने अपने देश को ही अपना प्रथम धर्म समझा है। धर्म समझ के ही तो उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की है। और इसको तो बलिदान स्तंभ को तो सर्व धर्म स्थल, पूजा का स्थान दिया जाता है, हर एक के लिए है। और ये नहीं कि देखिए जैसे मिलिट्री फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, सब ने जिसको अपने देश के साथ प्रेम है, और जिसको कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक, जिसको भी वतन की आबरू के लिए
अगर अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी है तो कोई पीछे नहीं रहा है। उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं वतन की आबरू के लिए। Havildar Daler Singh Bhau sacrificed his life for the defense of India in 1999 during the Kargil conflict while trying to flush out terrorists from Pakistan who had been holed up inside bunkers in the heights of Tololing. Pradeep Dutta met Havildar Daler Singh Bhau's wife, Sharda Bhau. अच्छा लग रहा, लेकिन ऐसा क्यों 75 साल क्यों लगे इसको बनने के लिए? पहले क्यों नहीं बना? पहले ही बहुत सारी सरकारें रही। हमारी माननीय महबूबा मुफ्ती की सरकार रही, डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला की रही, उमर अब्दुल्ला की रही। उनके मन में ये चीज़ें क्यों नहीं आई? ये पहले होना चाहिए थी, 75 साल पहले होना चाहिए था, जो कि आज हो रहा है। आप जानते हैं कि इन चीज़ों के लिए अगर हमारे शहीदों को याद करने के लिए ऐसी चीज़ें बने जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उन्हें एक प्रेरणा मिलती है, उन्हें एक शक्ति मिलती है, हिम्मत मिलती है कि हमारे देश के लिए जो वीरों ने जान दी उनके लिए एक बार मेमोरियल बन रहा है। तो मैं ये माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके मन में एक शहीदों के लिए इतनी उनको याद आया कि शहीदों का ये एक स्मारक बनाना चाहिए था। In February 2019, 40 Indian CRPF personnel were killed in a terror attack in Pulwama. One of them was Head Constable Nasir Ahmed. Hear his brother Wasim about what the Martyrs Memorial means to him. हमने अपना भाई खोया है, हमें बहुत दुख होता है सर। ये पहले जो सरकारें थी, जो कांग्रेस सरकारें जो इसे सबूत मांगती थी पुलवामा अटैक में, इनको क्या सबूत चाहिए सर? अभी ये हमें पूरे देश को पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं, हमें भी पता है, सारा पता है, सारा सब जनता जानती है सर, ऐसी बात नहीं है। इनको क्या सबूत चाहिए? ये बहुत ही अच्छा स्टेप है मोदी सरकार जी का, मैं उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये शहीदों के नाम से सबसे पहली स्टेप है जो उन्होंने उठाया हुआ है। श्रीनगर में मेमोरियल मना रहे हैं ये अपने शहीदों के लिए, हमें बहुत सम्मान है, हमें बहुत खुशी है, और ये आगे ऐसा चलता रहे और हमें बहुत खुशी है। We return to Srinagar and to Lal Chowk. Times have changed, but the place is the same. The message, however, is now different. It's of integration, not separateness.